Hey guys. So, hey guys, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं आई बिलीव 9:30। यस, तो आज है 7 तारीख और 9:30 बज रहे हैं। 7 तारीख 7 तारीख। तो मैं अभी छत पे आया हूँ, अभी उठा हूँ थोड़ी देर में। देखते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है और अभी हम लोग काम करने जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ ATM पैसे निकालने। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और आपके लिए एक वीडियो भी है और ताइक्वांडो से रिलेटेड बहुत ही अच्छी, तो उसे भी देखना, ठीक है। और उसको देखने के बाद में उसमें समझ में आएगा चीज़ें। मैं आज एक बेसिक एक्सरसाइज रूटीन बताऊँगा जो आप सभी कर सकते हो। आपकी एज ज़्यादा है या आपकी एज कम है या किसी भी एज के हो, आप वो एक्सरसाइज रूटीन कर सकते हो। आपको फ्लेक्सिबल करेगा, आपकी हिप्स को थोड़ा ओपन करेगा और आपको एक बढ़िया वार्म अप देगा, ठीक है। तो भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। कोविड से लड़ना है तो आपको इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो करते रहो, ठीक है। तो अभी देखो ये वीडियो और उसके बाद हम डे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बाय। मैं जा रहा हूँ ATM, तो और अभी हमें पैसे निकालने हैं। मैं पैसे निकालने के बाद बात करता हूँ। एक काम निपटा दिया है, अब दूसरे काम से गैस लानी है एक्चुअली, तो उसके लिए जाना है। तो अभी मैं दूसरे घर पे, यहाँ पे तो गाड़ी उठाऊंगा और जाऊंगा गैस लेने। हियर इज द की, लेट्स गो। थोड़ा साफ सफाई करते हैं गाड़ियों की। मैंने वीडियो देखा, कल वाला जो मैंने डाला है रात में, एक्चुअली 4 लोगों ने 3 लोगों ने 4 लोगों ने लाइक किया है। मेरे अलावा मैंने लाइक नहीं किया, 4 लोगों ने लाइक किया है। और एक अतुल स्टूडेंट आए थे हमारे यहाँ, तो मतलब स्टूडेंट वो सीखने के लिए आए थे, तो उन्होंने अभी रिप्लाई किया है। तो ग्रेट। मौसम तो आज मतलब नहीं पूछो, आपकी तरफ कैसा है यार, कमेंट करना। बहुत ज़बरदस्त मौसम है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम है और बारिश भी होने वाली है, लाइट भी चल जाएगी। अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं मुझे आइडिया आया कि वीडियोज़ के लिए ना रेगुलर मैं एक व्लॉग टाइप में रहेंगे मेरे वीडियोज़, और उसमें एक्सरसाइज रूटीन, बेसिक सेल्फ डिफेंस, ताइक्वांडो से रिलेटेड, मार्शल आर्ट से रिलेटेड, स्टंट से रिलेटेड, और एक चैलेंज मैं आपको रेगुलर दूंगा, वो आपको पूरा करना होगा। तो देखेंगे मैं कितनी बार कर पाता हूँ वो चैलेंज, सबसे कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, और आपको भी देखना होगा, तो आप देख के करोगे तो ना ये तो थोड़ा एक्साइटिंग होगा और मज़ा आएगा। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता चलेंगी, आपको क्या चीज़ों में मेहनत करनी है पता चलेगा, है ना। तो मज़ेदार होगा। अभी तो मैं बस मौसम एंजॉय कर रहा हूँ यार, सच्ची बहुत अच्छा मौसम है। ये मेरे घर के सामने का व्यू, एक छत से थोड़ा बहुत ऐसा रहता है चीज़ें, लेकिन ठीक ठाक है। ये लॉकडाउन का माहौल है, लग नहीं रहा है लॉकडाउन है।
exercise routine, basic routine that you will follow regularly, and it will help you to flexible. It will help you to build some strength in your body. Okay, and it will help you to be active every day. And tomorrow I will tell you more exercises that you can do while sitting on the ground, in a chair. If you can do everything anywhere, it will only take 10 minutes or 20 minutes, and that is very beneficial for you. Okay, so ये था एक्सरसाइज रूटीन. अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, शेयर भी करिए ताकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा. लाइक करो तो कल की वीडियो पे लाइक कीजिए. कुछ लोगों ने एक हमारे एडमिशन के लिए ऐसे जब कोविड से पहले तो उन्होंने भी कमेंट किया मेरे बारे में, मुझे अच्छा लगा. और तो थैंक यू सो मच है. जो भी आपको लगा समझें बताइए, जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो बताइए. मुझसे आप सीखना चाहते हो तो मैं हमारे साथ अच्छे लेवल में हो रहा हूँ. लेवल पर मैंने ट्रेनिंग कराई है, मैं सिखा रहा हूँ. मेरे फिंगर भी आपको बताइए तो आप लोग मैं आपको बताऊँगा. चलिए फिर ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है. खाना खाने जा रहा हूँ और आप लोगों ने एक्सरसाइज कर ली होगी. किसी भी टाइम आप एक्सरसाइज को कर सकते हो. सुबह उठ के, शाम में उठ के, दोपहर में कर सकते हो. जब भी मन करे एक बार दिन में ज़रूर करो क्योंकि वो हेल्पफुल होता है. फिर मैं भी खाना खाने में सिंपल खाना खाता हूँ, दाल चावल और कुछ मैं नहीं करता एक्चुअली. और आज का टेंशन में तो और नहीं करा, बस वेट ठीक ठाक रखना है, खाना है. और बस लैपटॉप चार्ज हो रहा है, कुछ काम करना है. एक मतलब तो उसके एड्स, डांस क्लासेस के एड्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैं भी थोड़ा काम करूँगा. और फिर हम आज गो टू स्लीप फॉर सम टाइम. इवनिंग बैच है ट्रेनिंग का, ऑनलाइन ट्रेनिंग, और वो करने के बाद फिर देखते हैं कैसा चलता है. सो आई फील कि आप लोग बोर नहीं हो रहोगे. अगर बोर हो रहे हो तो मुझे बताओ. मैं ना कुछ और भी चीज़ें सोच रहा हूँ, जो चैलेंज टाइप की कुछ चीज़ें जो मैं आपको दूँ और आप भी करते करो. मैं भी करूँगा, आप भी करो, है ना. तो सिंपल एक्सरसाइज से रिलेटेड ही होगा. सो रेगुलरली हम कुछ ना कुछ करेंगे. उसका मैं भी थोड़ी देर में बताऊँ. तो नेक्स्ट वो चैलेंज हो सकता है आपके कुछ देखते रहो. बाय. शुरू हो चुकी है यार. तो अभी मैं जा रहा हूँ और मैं बात करता हूँ. क्या लाइव निकली जाएगी, लाइब्रेरी चली गई है सही. तो मिलेंगे अभी मैं लाइब्रेरी में. आपको अगर चैलेंज मुझे आ गया समझ में मैं बताऊँगा, और अगर नहीं आता है तो कल के ब्लॉग में देखिएगा कि क्या चैलेंज है मेरे पास आपके लिए, और मैं कितना वो चैलेंज कर सकता हूँ और आप कितना कर सकते हो. ठीक है, तो फिर पता चलेगा सीधे आपको अपने बारे में कि आप में कितना दम है और मेरे में मुझे कितना दम है. तो वो आपके खुद के लिए भी होगा. देखो, है ना, तभी इम्प्रूव कर सकते हो. चलो.